Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. Well, I'm your English teacher, Miss Iram Naz, and I welcome you all in our today's lecture. This is an important message for both Group A and B students that this homework will be done by both of the groups. Group A will do this homework on Tuesday, and Group B will do this homework on Monday. वेल बिफोर बिगनिंग मैं आपको कोरोना वायरस के मतलब कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ दैट यू शुड ऑलवेज वेयर योर मास्क एंड यू शुड सैनिटाइज योर हैंड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट एंड यू शुड मेंटेन सम सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्लस स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा गया है कि आप लोग जो है शेयरिंग अभी भी कर रहे होते हैं तो बेटा शेयरिंग आप लोगों ने नहीं करना बिकॉज शेयरिंग के ज़रिए भी क्या होता है जो वायरसेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो मेक श्योर दैट व्हेन यू कम टू स्कूल यू शुड हैव योर स्टेशनरी विद यू योर वाटर बॉटल योर लंच योर नैपकिन एवरीथिंग शुड बी विद यू आपने शेयरिंग नहीं करना ठीक है एंड यू शुड वेयर योर मास्क प्रॉपरली बिकॉज वेयरिंग इज caring. Very good. So let us begin with our today's work. This homework is for both group A and B. Make sure that you write your proper date and day on top of the pages, okay? So what is our today's task? Today we will do school workbook, page number 27 and 28. Sight words from our school workbook. This is your English school workbook. So what exactly are sight words? Sight words are commonly words that kids recognize instantly without sounding them out. Recognizing words by sight help kids become faster, more fluent readers. Many sight words are tricky to read and spell. They aren't spelled the way they sound. Sight word students वो words होते हैं जो कि जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है उस वर्ड पे आप फ़ौरन से पहले उसको रीड कर पाते हैं और ये साइट वर्ड को रिकग्नाइज करने का तरीका ये होता है कि बार बार जब आप रीडिंग करें तो एक ही वर्ड आप जैसे देखते होंगे द एंड सेड हैज़ टू इन कुछ ऐसे साइट वर्ड्स होते हैं जो बार बार रेपिटेटिवली वो क्या करते हैं बार बार आपके किसी भी स्टोरी में या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको नज़र आते हैं तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड साइट वर्ड्स अब इनको लर्न करने का कोई ट्रिक नहीं है कोई उसके टिप्स नहीं है बहुत लोग उसको अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे फिंगर की मदद से कुछ बच्चे फोनेटिकली उसको स्पेल आउट करते हैं कुछ बच्चे अपने शोल्डर पे टैप करते हुए उसको टैप आउट भी कर सकते हैं दे आर मैनी वेज दैट यू कैन मेमोराइज दीज साइट वर्ड्स ठीक है और इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज दीज साइट वर्ड्स देन यू कैन बी अ वेरी फ्लुएंट रीडर ओके लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर sight words. Today, our first word is said. Said. How will you pronounce this word? Said. अब आप देख रहे होंगे कि AID जो है वो aid करके साउंड देता है तो ये तो said पढ़ना चाहिए हमें इसको No, it is said because AI जो है one sound निकाल रहा है so this word is said. Our second word is has. Has. How will you pronounce this word? Has. Has. So let us begin our today's work. Before beginning, make sure that you write the date and day on top of the pages. This is your school workbook, page number 27. Today we learned a new word that was said. What was it? Said. So what you can read on the top of the page, it's written superstar sight word. Said. Over here you can see there is given some very fun activities, small activities आपको छोटे छोटे टास्क यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें आपने क्या करना है फर्स्ट ब्लॉक में देखिए कलर द वर्ड्स अब यहाँ पे आपको 6 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं नाउ यू हैव टू सी दैट वेयर इज़ द वर्ड said written and you have to color it so I will color said like this and like this okay you also have to do the same okay like this now in the second you can see trace the word का मतलब है that you have to write this word over here 2 times you have to write said like this 2 times okay up and down
Now in the third, you can see read the words. Now you can see कि यहाँ पे आपको 2 sentences दिए हैं और आपको इसको 2 to 3 times इसको read करना है. So you will be able to understand that आपने said कहाँ use करना है और किस तरह use करना होता है. That is what I said. That is what I said. She said right. She said right. इन sentences को students आपने 2 time इसको read करना है. Okay. Now the third task given in this page is circle the word. This is so easy. What you have to do, you have to find कि said कहाँ लिखा हुआ है and you have to circle it. Okay. And then the last task given on this page is write the word. Now you have to write said 2 times again over here and see that sentence क्या बनता है. If I write said, for example, he said yes. She said look here. So आपने said बिल्कुल इसी तरह 2 times लिखना है. Okay. So let's proceed further. This is your page number 28. Over here the new sight word is has. अब आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पेज नंबर 27 में टास्क किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको 5 स्मॉल टास्क दिए हैं. इनको आपने खुद से करना है. एंड अगेन यू हैव टू रीड द वर्ड. ओके, फ्रॉम द सेंटेंसेस. ही हैज़ अ पेन. शी हैज़ अ डॉल. ओके, यू हैव टू रीड इट लाइक दिस. तो इस तरह क्या होगा दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये वाले साइट वर्ड्स कब, कहाँ और किस तरह यूज़ करने हैं. ऑल राइट. Has, and when you have to trace, you will write has like this. All right. Well, excellent work, my dear ones. You have done a very good job. Remember to do your work neatly and carefully. Write the full date and day on your workbook and learn and practice the work. Learn and practice the work का मतलब है students that अब आपने said का मतलब said and has जो new words आज आपने learn किए हैं, you have to read it in your books. अब आपने book कोई भी open कर लेना है and when you will read then you will be able to read it fluently because आपने इसको 2 to 3 times repeat जब आप करेंगे, so you will know that this is said and this is has. So you have to learn and practice it again and again, okay? Well, thank you so much, and don't forget to like and subscribe our YouTube channel and press the bell icon for new notification and updates. This is Miss Iramna signing off, and inshallah I'll see you in my next video lecture. Till then, Allah Hafiz.